Good morning, students. In this lecture, we will talk about types of companies. There are different bases on which we define different types of companies. First basis on the basis of incorporation. That is how the company is formed. On the basis of incorporation, we have three types of companies. First is chartered companies, second is statutory companies, and third is registered companies. First, we'll talk about chartered companies. Chartered companies are those companies which are formed by a royal charter. Royal charter means Rajsi Adesh, that is on the order of the ruler or on the order of the king. So these companies no longer exist now, and if I want to give an example of a chartered company, that would be East India Company. We all have heard about East India Company. This company was formed on a royal charter, right? So now, since there are no longer kings, no kingdoms, so there are no such companies as of now. Next, we move on to statutory companies. Statutory companies are those companies which are formed by a special act of parliament, right? Like SBI was formed, State Bank of India, like Reserve Bank of India, like Life Corporation of India. In example of statutory companies are RBI, SBI, LIC, Life Insurance Corporation. So for these companies, a special act in parliament has to be passed. Now moving on to third is the registered company. Registered companies, as the name is suggesting, registered companies are those companies which are registered under Companies Act. Now this Companies Act may be of 1956 or as of now it is the 2013 Act which registers the companies. So this was the first base, that is on the basis of incorporation, that is how the company is formed. Next, second base is on the basis of liability. We all know that the most attractive feature of a company is that it has a limited liability. Why partnerships fail? Because there is a problem of unlimited liability. Partners do not want to bear the unlimited liability, so they move on to the company form. Still, we have two types of companies, companies with limited liability and companies with unlimited liability. Limited liability means that shareholders' liability is limited. Shareholders have limited liability. That is, if I have shares of rupees, I have purchased shares of rupees 1000 from Reliance, then my liability would be 1000 only. मुझे 1000 से ज़्यादा पैसे रिलायंस को नहीं देने हैं, राइट? सपोज कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, लॉस में जा रही है, तो माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू ₹1000 ओनली. सो दैट इज द मेन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ अ कंपनी कि एक छोटा इन्वेस्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसको लॉस का डर नहीं है. लेकिन अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करती हूँ सपोज, तो सारे लॉसेज मेरे हैं. अगर वो पार्टनरशिप फेल हो जाती है तो आई हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो most of the companies are limited liability, but our law also allows formation of unlimited liability companies. Unlimited liability means members have unlimited liability. That is, like in partnership, each member is responsible for all the losses of the company. As I have already told you, such companies are not very popular. And the members of these companies, if they have the companies wound up or they have left the company, their liabilities will remain after 1 year of when they have left the company. So limited liability companies are popular. And one more thing I would like to add here, that is limited liabilities of two types. One is limited by shares and another is limited by guarantee. Right? Those companies which have share capital, there my liability is limited to the number of shares I have or the value of the shares I have. And there are some companies which do not have share capital. There my liability is limited to the guarantee I have taken. जब कंपनी वाउंड अप हो जाएगी, वाइंड अप हो रही होगी, तो उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने गारंटी लिया है कि मैं इतने पैसे दे दूंगी अगर कंपनी वाइंड अप होगी, तो दे आर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. और ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं विच आर बोथ लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज बाय शेयर्स.
So this was the second base of classification, that is on the basis of liability. Let's move further. Third type of company is the most important type, which we all must know, that is on the basis of transferability of shares. On the basis of transferability, there are two types of companies, private companies and public companies. First, we'll talk about private companies. Private companies have been defined in Section 2, subsection 68 of the Companies Act, and a private company has three main restrictions, or you can say three main features. The articles of a private company have three main features. What are these three main features? First feature is there is restriction on transfer of shares. A member of a private company cannot freely transfer its shares as in case of a public company. There are limited members, they can transfer among themselves, but they cannot transfer freely. There are restrictions. So first condition is this. Second, maximum members are 200 only. That is second requirement. And in these 200, we are not counting the present and the past employees of the company, if they are members also, right? We are not counting the present employees who are members, and we are not counting the past employees who are members, right? So we are not counting the present and the past employees. So that is maximum limit is 200. And the third and the most important restriction is they cannot invite public to subscribe to its share, right? So the articles of a private company, or you can say this is the definition of a private company, that a private company should have these three features. It restricts members to transfer its shares, maximum number of members is limited to 200, and it cannot invite public to buy its shares, right? And one more thing, earlier there was a condition that there was a condition of minimum paid up capital for a private company of 1 lakh, but now this condition no longer exists now. So we say a private company is a company with the minimum paid up capital as may be prescribed. That means it may change from time to time, but as of now there is no such minimum limit defined, right? Next, one more thing about private company, that is a private company has to put the name private limited after its name. उसको अपने नाम के पीछे private limited word लगाना पड़ता है. So that is another condition. Private company के बाद आती है public company. Public company को define किया गया section 2 subsection 72 में, और बड़ी एक simple सी definition है कि a company which is not private is public. That means जिसमें ये तीन conditions नहीं हैं जिस company में, जिसमें easily transfer कर सकते हैं share, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, और जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, ठीक है? इसमें भी कोई मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट डिफाइंड नहीं है. पहले 5 लाख होती थी, अब नहीं, ठीक है? और इसको अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाना, ठीक है? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, हमारे पास उसके शेयर्स हैं, लोगों के पास शेयर्स हैं, जनरल पब्लिक के पास शेयर्स हैं, टाटा सन्स हैं, इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, लोगों के पास उसके शेयर्स हैं. सो द कंपनीज विच सेल देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक आर कॉल्ड पब्लिक कंपनी. एंड वन मोर क्लैरिटी आई वुड लाइक टू गिव हियर, जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, पब्लिक कंपनी डज नॉट मीन गवर्नमेंट कंपनी. लोगों को लगता है पब्लिक कंपनी का मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर होता है वो, ठीक है? दैट इज पब्लिक सेक्टर, कि हम कहें पोस्ट एंड टेलीग्राफ कि पब्लिक सेक्टर है. इट इज नॉट पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं होती, ठीक है? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, जिसके शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हों, उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की कंपनी भी पब्लिक हो सकती है. अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स बेच दे तो वो भी पब्लिक कंपनी हो सकती है. So there is a difference between a public company and public sector, right? So that was the third base on the basis of transferability of shares. Next, we move further. Fourth base on the basis of ownership, कि कौन own करता है shares को. तो ownership के base पे we have first government company,
गवर्नमेंट कंपनीज को अब हम डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसमें कि मोर देन 50% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे हम बात करते हैं गेल की, जैसे हम बात करते हैं BSNL की, तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का 50% या उससे ज़्यादा शेयर है। दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कुछ अलग से कंडीशंस होती हैं जो ब्रीफली मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉपर ऑडिट होता है। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, उनकी जवाबदेही है, तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए जो ऑडिटर है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं। वो ऑडिटर प्रॉपर ऑडिटिंग करता है, उसकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही है कंपनी तो रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन Lok Sabha, and if it is owned by state government, the report is presented in Vidhan Sabha, right? Plus, there are certain conditions which are not applicable. There are certain provisions of the Companies Act which are not applicable on a government company, like the appointment of directors or meetings, because they have their own set of rules. They are managed by the government. Another thing which is important to know about government companies is that employees of a government company are not central government employees, right? वो कंपनी के ही एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होते। और फिर एक और चीज़ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि गवर्नमेंट कंपनी एक फिक्स एंड मिक्स एंटरप्राइज है, कि वो उसमें फॉरेन का शेयर भी हो सकता है। इट कैन बी अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो, एज आई टोल्ड अर्ली, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो, कि उसमें पब्लिक का भी शेयर हो सकता है गवर्नमेंट के साथ साथ, उसमें किसी फॉरेन इन्वेस्टर का शेयर भी हो सकता है गवर्नमेंट के साथ साथ, but it will be treated as a government company, right? So this is all about government company. इसको section 2 subsection 45 में define किया गया। Next base जो हम आज discuss करेंगे that is holding and subsidiary company। holding and subsidiary company को section 2 subsection 46 में define किया गया है। और सबसे पहले होल्डिंग कंपनी को क्या डिफाइन किया गया है कि एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग तभी है अगर दूसरी उसकी सब्सिडरी, राइट? वन कंपनी इज होल्डिंग ऑफ अदर इफ अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। ऐसी डेफिनेशन है लॉ में, कंपनीज एक्ट में। जैसे हम कहते हैं यूनिलीवर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यूनिलीवर इज द होल्डिंग कंपनी एंड HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज इट्स सब्सिडरी। हम कहते हैं कि यूनिलीवर HUL की होल्डिंग तभी है अगर HUL उसकी सब्सिडरी है। इस तरह से डिफाइन किया गया है। और फिर सब्सिडरी को डिफाइन किया गया। सब्सिडरी को कैसे डिफाइन किया गया कि एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी है अगर होल्डिंग में उसका मेजॉरिटी शेयर है, होल्डिंग में उसका मतलब मोर देन 50% उसका शेयर है, या वोटिंग राइट्स है अगर शेयर कैपिटल नहीं है, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करने में होल्डिंग का मेजर रोल है। ठीक है, कि अगर होल्डिंग कंपनी ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म करती है या उसको गवर्न करती है, then we say कि this company is subsidiary of another company, right? एक और चीज सब्सिडरी कंपनी में डिफाइन की गई है कि अगर जैसे I'll give an example, if there are 3 companies, we say if C is subsidiary of B and B is subsidiary of A, then C is also subsidiary of A, right? So a company is subsidiary of other and other is subsidiary of still another company, then this is also subsidiary of the main company. So this is how we define holding and subsidiary. होल्डिंग को कहा है कि होल्डिंग वो है अगर दूसरी उसकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर एक कंपनी में दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में दूसरी कंपनी का मेजर रोल है, या उसके वोटिंग राइट्स दूसरी कंपनी के हैं, तो दूसरी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. We'll continue about types of companies in our next video. Thank you so much.